Hello my dear kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 5. This is a book, Joyfull Mathematics, and today we are going to start chapter number 21, which is Data Handling. So let's start. Here you can see some pictures are given and our table is made. The pictograph below represents the number of mathematics class 5 textbooks sold by a shopkeeper during a week. तो एक शॉपकीपर को काम मिला था बुक्स को सेल करने का, तो उसने 1 वीक में कितनी बुक सेल की? लेट्स सी. लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आप देखो, मंडे को उसने बुक की 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे एक बुक का मतलब है 10, तो टोटल बुक्स उसने जो सेल की हैं वो है 80 बुक्स. सिमिलरली ट्यूसडे को उसने 1 2 3 4 5 6 विच मीन्स 60 बुक्स. सिमिलरली उसने बाकी बुक्स सेल की हैं. अब यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को उसने कितनी बुक्स सेल की? सो यस, वी नो इट्स 60. Similarly, children, you have to read the rest of the questions and answer the questions. Another question is given here. Here, a tally chart is given. This is tally chart. यहाँ पे fruits के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे tally marks लगाए हमने और यहाँ पे frequency बताई गई है कि कितने हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हो mango कितने हैं. So ये जो tally chart है, आप इसको अगर ध्यान से read करें, so this whole means 5. Again, it's 5 and 2, which is 12. The total 12 है mangoes. तो 5 के केस में हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 के बाद 5 को हम क्रॉस कर देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे पपाया है 14, तो हमें 14 मार्क्स बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सिमिलरली ग्रेप्स के लिए हम करेंगे और ऑरेंजेस के लिए करेंगे एंड एप्पल्स के लिए. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. वी आर फेमिलियर विद 2 टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, नेमली पिक्टोग्राफ एंड बारग्राफ. हमने पहले इनके बारे में पढ़ रखा है. अब पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग picture symbols, जिसमें picture symbols हैं. While a bar graph is a representation of numerical data. ये जो bar graph है ये क्या है? numerical data को represent करता है horizontally या फिर vertically and uniform width and equal spacing between them. Let's learn what is a frequency table. We can represent data in the tabular form too. हम डेटा को tabular form में भी लिख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में. Such tables are called frequency table और ऐसे टेबल्स को हम frequency table कहते हैं. Frequency means how frequently a particular item is represented in data. Frequency का मतलब होता है किसी भी आइटम को हम कितनी जल्दी represent करते हैं. Now, number of times an observation repeats itself in a data is called frequency. कितनी बार कोई observation अपने को repeat कर रहा है, इसे ही frequency कहते हैं. Here example 1 is a shopkeeper sold 14 bread, 30 eggs, 8 packets of butter, 17 biscuit packets in a day. Represent the data by frequency table. हमें frequency tables में हमें ये data represent करना है. So here we represent the data, the number of different items by tally mark. हम tally mark से इन सबको represent करेंगे. We use 1 bar or tally mark for 1 item. Remember, if 4 tally marks, after 4 tally marks, we represent 5 as by crossing. अभी मैंने आपको बताया 4 के बाद 5th को हम cross कर देते हैं. So this means this is 5. The total number of tally marks represent the total number of items. जितने tally marks है उतने items होते हैं. So the table represent different items sold by the shopkeeper. तो bread कितने थे? 14. तो 14 के लिए हमने 5 plus 5 10 and plus 4 40. 30 eggs थे, तो 30 eggs को हमने represent किया है यहाँ पे. 8 butter packets थे, तो 8 represent है. 5 6 7 8. Now 17 biscuit packets, तो
5, 10, 15 and 60, 70. So this is the way of representing the frequency table. Now here you can see there's an exercise number 21.1. Let's answer the questions. The local bookshop issued books on 5 days of a week. एक बुक शॉप है, उसने बुक्स को सेल किया है. रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. हमें टेबल को पढ़ना है और क्वेश्चन को आंसर करना है. सो ये मंडे में उसने कितने बुक्स सेल किए? 13. ना ट्यूसडे 19, वेडनेसडे 21, थर्सडे 19 एंड फ्राइडे 25. हाउ मेनी बुक्स वर इशूड ऑन मंडे? मंडे को कितनी बुक्स थे जो इशू किए गए? तो कितने थे टोटल? 13. ऑन विच 2 days the same number of books were issued? कौन सा दिन था जिसमें एक जैसे बुक्स को इशू किया गया था? तो ये है ट्यूसडे एंड थर्सडे. So these are the days जिसमें ये बुक्स इशू किए गए थे. Similarly, you have to find the answer of the rest questions that are given here. Next question number 2 is the following are the number of children in a family of 20 students of class 5. तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 में. उनकी फैमिलीज के बारे में लिखा गया है कि हर बच्चे की फैमिली में कितने कितने लोग हैं. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नाउ टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. सो हमें यहाँ पे वी हैव टू complete this table that is given here and then we have to answer the question. So here we can see how many ones are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total there are 9. 5 plus 4 is 9. अब 2 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here we will write 8 और यहाँ पे 8 tally marks बनाएंगे. So 5, 6, 7, 8. Similarly 3 कितने हैं? It is written here. अब कितने थे? 1, 2, 3. So it's 3 here. 1, 2, 3. So this we have to do here. Now let's answer the following questions. Fill in the tally and frequency columns of the table given above. This we have done. Now how many students have no brother or sister? कितने बच्चे जिनके कोई भी brother या फिर sister नहीं है? So children, there are 9 children जिनके कोई भी brother sister नहीं है क्योंकि वो बच्चा अपने घर में इकलौता है, एक ही है. Now how many families have 3 children? कितनी families है इसमें 3 children? तो 3 children यहाँ पे है. तो कितनी families हैं? 3. So similarly, I have to answer the rest of the questions. Now what is pictograph? So when we represent the data using pictures, we call it a pictograph. जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर फॉर्म में, हम उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं. लेट अस लर्न एंड रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग पिक्टोग्राफ. Here the temperature of a city is given for 7 days of a week and the temperature is 40 degree on Monday, 30 on Tuesday, 45 Wednesday, Thursday 25 degree Celsius, Friday 40 degree Celsius and so on. Now let us represent the data using the pictograph. अब हमें ये जो है शो करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना, उसमें हमें शो करना है इन्हें. तो आप देख सकते हो कि जितने नंबर्स हैं वो कौन सी टेबल में आते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस और आधे का मतलब है 5 डिग्री सेल्सियस. तो जहाँ पे भी अब जब मंडे को कितने 40 तो 40 वी हैव टू डिवाइड बाय 10. 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक का मतलब है 10. सो 10 से डिवाइड करके आंसर आया 4. तो यहाँ पे 4 सन बनाएंगे. इसे 10 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3 तो 3 सन बनाएंगे. इसे डिवाइड करेंगे जब 10 से वी विल गेट 4.5 मतलब 4 सन तो बनाने हैं, उसके बाद एक आधा सन बनाना है. सिमिलरली 25 को जब डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 2.5 तो 2 बनाने और एक आधा बनाना है. ये 4, ये 3.5 एंड ये 5.5. तो यहाँ 4 बनाया, यहाँ 3 और आधा बनाया, यहाँ 5 और आधा बनाया. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अबव गिवन थिंग्स ऑन द पिक्टोग्राफ. अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच डे वाज द हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे कौन सा था एंड सो ऑन.
Now children, let's do this exercise number. So children, let's do this exercise number 21.2. So here the number of trees is given and it's inside a garden of a town. Here you can see mango are 75, neem 250, banyan is 225, people is 375 and palm is 175. अब यहाँ पे लिखा है कि इंफॉर्मेशन भी दी गई कि पिक्टोग्राफ हमें जब बनाना है तो 1 ट्री का मतलब है 50 और आधे का मतलब है 25. तो हम इन सारे को 50 से डिवाइड कर देंगे. सो 50 से डिवाइड करने पे वी गेट 1.5. अब इसे जब हमने 50 से डिवाइड किया वी गेट 5. ना अब जब इसे हमने 50 से डिवाइड किया वी गेट 4.5 एंड सो ऑन. तो हम क्या करेंगे, मैंगो के कितने ट्री बनाएंगे, 1 ट्री बनाएंगे एंड हाफ ट्री बनाएंगे. अब ऐसे नीम के कितने बनाएंगे, 5 ट्री, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री एंड 5 ट्री. सो ये हमारे हो गए मैंगो के ट्री और ये बन गए हमारे नीम के. Similarly, we have to complete this question. Now children, let's move on to question number 2. The following pictograph shows the preference of students of class 5. ये जो पिक्टोग्राफ है हमें बता रहा है क्लास 5 के स्टूडेंट्स के बारे में रिगार्डिंग देयर फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर. अब चिल्ड्रन हैं, उनके क्रिकेट प्लेयर्स दिए गए केएल राहुल, इतने बच्चों के हैं धोनी, कोहली, जडेजा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा. और एक स्टार का मतलब है 8 स्टूडेंट, हाफ स्टार का मतलब है 4 स्टूडेंट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5. तो 5 मल्टीप्लाई 8 विच इज 40. अब ऐसे हम इन्हें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 8 विल बी 64. Similarly, we have to find the rest. Now we have to answer the questions that are given here. How many students like Dhoni? Dhoni, कितने बच्चे धोनी को पसंद करते हैं? So we have to write from there. How many more students like Kohli than Jadeja? कोहली के जो बच्चे हैं और जो जडेजा के बच्चे हैं उन दोनों का हम करेंगे यहाँ पे subtract. So which player is the most popular? जिसको सबसे ज्यादा स्टार मिले, that player is the popular one. So we have to write the answer here. Now children, let's move to question number 3. The number of students absent from class 5 in particular week is shown here. So यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो absent हो गए थे क्लास 5 में. मंडे को 12 थे, ट्यूसडे को 10, वेंसडे को 8 एंड थर्सडे को 4. तो अब हमें क्या करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, एक स्माइली बनानी है जिसका मतलब है 2 बच्चे. तो हम क्या करेंगे, इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ 6 स्माइली बनेंगी, यहाँ पे 5 स्माइली बनेंगी, 4 2 3 एंड 6. तो मंडे का जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे 6 स्माइली. सिमिलरली जब ट्यूसडे का बनाएंगे तो हम बनाएंगे 5 smileys and so on. So this you have to do on your own. Now fourth question, the number of laptops sold by a shopkeeper using during 6 months. तो एक शॉपकीपर ने लैपटॉप को सेल किया था 6 months में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. यूज 10 लैपटॉप के लिए, अगर 10 लैपटॉप्स की बात है तो एक ये बनाना है और 5 लैपटॉप्स है तो हाफ लैपटॉप बनाना है. So here this question you have to do on your own. You have to draw the pictograph. Now question number 5. The following table shows the rainfall in Delhi during rainy season. अब ये जो पिक्टोग्राफ है हमें रेनी सीजन में रेनफॉल कितना हुआ था वो बता रहा है. हमें यहाँ पे भी क्या करना है, we have to draw the pictograph and then we have to answer the question that is given here. I hope that you will do it on your own. Now let's learn what is bar graph. Another way to represent data is bar graph or column graph. These graphs are simple to draw, convenient to read, and comparison of the given data is easier. They help us to understand the number of quantity being talked about. So let's see the example number 1. The weight of 5 children are given.
यहाँ पे 5 बच्चे हैं, उनका वेट दिया गया है। अब हम इसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज अ बार ग्राफ। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज आर एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है। अब जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने नेम ऑफ चिल्ड्रन लिखा है और वाई एक्सिस में उनके वेट्स लिखे हैं। तो यहाँ पे नूपुर है जो 28 kg की है, तो हमने 28 को से मार्क किया है। विराट 30 है तो 30 को मार्क किया है, विच इज बिटवीन 28 एंड 32। नाउ नितिन के लिए 34, 32 और 36 के बीच में, 36 है अर्णव का और शालू के हैं 30। So here we have marked the weights of this all the given children here. Now in the bar graph, data is represented using rectangular bars. Rectangular bars बनाने हैं जो कि equal width में होते हैं, equal distance में होते हैं. The height of each bar depends on numerical data. जो height होती है वो numerical data पे ही depend करती है. The bar graph uses a scale which is simply a relation between unit length and number of object is present. That is, scale is above graph. 1 centimeter का मतलब है 4 kg. So here let's see this exercise 2.3 we are going to do. Here we have to look at the given bar graph and that shows the sale of different flavors of ice cream parlors in a day. अलग अलग ice creams, vanilla, strawberry, chocolate, orange, mango and pineapple. इन ice creams की कितनी सेल हुई वो हम रीड करेंगे. So we have read it. यहाँ पे आइसक्रीम्स के नेम दिए गए और कितनी कितनी क्वांटिटी गई है वो हमने देख ली. What information is given in the bar graph? So the bar graph shows us the flavor of ice cream. The bar graph shows the sale of different flavors. Now, which flavor of ice cream was sold maximum? सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर सोल्ड किया गया था? तो ये हम देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा ऑरेंज को सोल्ड किया गया. Which flavor of ice cream was sold minimum? सबसे कम कौन सा सेल किया गया? Yes, mango. So similarly, children, you have to answer the rest questions that are given here. You have to read it, and after seeing the bar graph, you have to answer the questions. The next bar graph here shows how the total number of students of class 5th and who attended class during the week. क्लास 5th के बच्चे उन्होंने कैसे कैसे क्लास अटेंड की. दिस इज शोन हियर. मंडे को कितने बच्चे थे? 80. ट्यूसडे is 50, Wednesday 20, Thursday 60, Friday is the maximum which is 90. अब इस बार ग्राफ को पढ़ने के बाद we have to answer these questions. So this you have to do on your own. Next question number 3 is the following data is about the number of students in each section of class 5. So हर एक सेक्शन में कुछ बच्चे हैं. आपको ये जो डेटा है इसे रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सेम वी हैव टू डू. हमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखना है वाई एक्सिस पे और क्लासेस लिखनी है एक्स एक्सिस पे. तो यहाँ पे क्लास हो गई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए. अब हमें जो है बार ग्राफ बनाना है, कितने 10 की वेरिएशंस लेनी है. So like this you have to draw the bar graph. Now the next question is also here. Here also you have to draw the given bar graph. What is pie chart or circle graph? So data can be represented by dividing a circle into sectors. Such representation of data is called pie chart or circle graph. A pie chart or circle graph is used to compare parts of quantities of bigger quantity which is divided into many parts. By looking at the area covered, we can easily tell which quantity is given. हम area को देख के बता सकते हैं कौन सी quantity ज़्यादा है. So here the example 1 is the pie graph shows the time Zoya spent on various activities. Zoya एक girl है, उसने कितनी activities में कितना time spend किया. This can be seen from here. Here we have to study the pie chart and answer the following questions. अब आप देख रहे हो कि which activity takes up Zoya's maximum time. कौन सी activity में उसने ज़्यादा time लगाया है? Yes, it's study. Which activity is the least time? सबसे कम time किसमें लगाया है? Eating. Yes.
and which two activities take the same time? कौन से दो activities हैं जिसमें same time ले reading and watching TV? So I hope this is clear. So now let's do this exercise 21.4. The students of class 5 voted for their favorite ice cream flavor. Class 5 के बच्चों ने अपने ice cream flavor के लिए vote किया है. So let's see what's written in the data. Vanilla, chocolate, mango and strawberry. Let's do the questions. Which ice cream flavor is most popular? सबसे ज़्यादा popular क्या है? Chocolate. Next, which ice cream flavor is least popular? सबसे कम popular कौन सी है? Strawberry. And so on. You have to do the rest questions like this. Similarly, you have to do this question number 2, जिसमें कुछ snacks को describe किया गया है. And question number 3 is the same. ऐसी question number 3 भी आपको खुद से करना है. Now let's move on to question number 4. Which favorite cartoon program of 200 children are given in the following table? यहाँ पे 200 चिल्ड्रन की बात की गई है, उनकी फेवरेट कार्टून प्रोग्राम दिए गए हैं. आपको पाई चार्ट ऐसा ही बनाना है और उस पर रिप्रेजेंट करना है इन सबको. सो you have to do this on your own and then you have to answer the questions. Which cartoon show is most popular? Which cartoon show is least popular? And so on. Now let's move on to question number 5. The marks obtained by Ankit in different subjects in final examination is given below. तो marks अंकित को मिले थे final examination में क्या क्या थे? English में 90, Science में 85. So there were total marks of 500. तो 500 marks थे. अब हमें क्या करना है? एक पाई चार्ट बनाना है और उसमें मार्क्स को हमें रिप्रेजेंट करना है. टोटल 500 में से इतने मार्क्स मिले थे बच्चों को. Next, same question is here. Here also you have to make a pie chart, and here the different modes of transport are given that are used by 60 students of class 5. School bus 20 बच्चे use करें, private bus 8, bicycle 6, rickshaw 8, and on foot 18 are covered. So you have to make the pie chart as we have learned in this chapter. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood and enjoyed it. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.